dais. I also extend a very warm welcome to the Honorable Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Apurva Chandra, and Additional Secretary, Ms. Neerja Sekhar. We also have with us Joint Secretary, PNA, Shri Vikram Sahai, and Joint Secretary, Broadcasting, Shri Sanjeev Shankar, to grace the dais. To begin this occasion, I would request Joint Secretary Shri Vikram Sahai to present a token of respect and welcome our chief guest, Honorable Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur, and respected Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Apurva Chandra. Thank you, sir. In the words of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, I dream of a digital India where knowledge is strength and empowers the people. Taking this vision forward, today we are gathered here to mark the launch of Broadcast Seva portal. I would now request Joint Secretary Shri Vikram Sahai to present his opening remarks. Honorable Minister for Information and Broadcasting, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, my colleagues, senior colleagues from the Ministry on the dais, Principal Director Generals, senior officers of the Ministry of Information and Broadcasting, and from the media units, CMD Basil, senior executives from amongst broadcasters, DTH operators, multi-service operators, private FM stations, community radio stations, my friends from the media, ladies and gentlemen. At the outset, I would really like to thank our Honorable Minister for having graced this occasion. So, every such initiative which this ministry takes, your presence and your encouragement means a lot to us, sir. And thank you so much, sir, for taking out your time, encouraging us, and believing in us and having faith in us, sir. Thank you so much, sir. So there are three strands to the Broadcast Seva portal, which is being launched today. The first is, we had a portal in 2016, we developed in 2016, and it was doing its work quite well in terms of giving a lot of benefits to the stakeholders. But gradually with time, the expectations and the aspirations of our stakeholders far exceeded what was being offered by this portal. And sometime in late 2019 or early 2020, we decided that we need to come out with a much more robust platform. And that is what we have, sir. We have moved from a flat, unidimensional and a static portal to a multidimensional dynamic portal, which is being presented before you, sir. The second strand, which I would like to emphasize, sir, that this portal has been developed through a collaborative effort with Basil, our technical consultant partner, and TCS, which was roped in to develop this portal. So equally important, which otherwise gets unrecognized, has been the very, very hard work put in by the officers in our ministry, our undersecretaries, our directors and deputy secretaries, of the like Shri Amrendra Singh, Shri Vijay Kaushik, Shri Gopal Sadhwani, Shri Kesarwani, Shri Yogendra Trehan, Subhash. They all have worked very hard. And my erstwhile directors, sir, Amit Katoch and GC Aron, both all of them have worked very hard. And my compliments to all of them for having worked so well and so diligently for making this possible today. And the third and the most important strand, sir, that sometime in the month of September, our secretary took a meeting of the entire nuances of this portal, and his insight and his inputs since then, guiding us through several rounds of meeting with us, that has been the real silver lining, sir. And much of what we see today as a functionality of this portal, I would attribute it to Secretary Sir's deep involvement, sir. Thank you so much, sir, for your guidance and support. Again, I would thank all the broadcasters for turning in large numbers, for being very patient with us at the time when we were transiting from the old portal to the new portal. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now, to take you through its many features, we present to you a glimpse of the dynamic Broadcast Seva portal through an audiovisual video. Let's have a look. Broadcast Seva portal
is an integrated online portal for speedy processing of applications of various broadcasting licenses, permissions, registrations, etc. It is a major step forward to improve ease of doing business in the broadcasting sector. The portal provides a 360-degree solution to various stakeholders of the broadcasting sector. It will benefit more than 900 satellite TV channels, 70 teleport operators, 1,700 multi-service operators, 350 community radio stations, 350 private FM channels, and others. This simple yet advanced web solution provides a broadcaster an end-to-end solution to various regulatory and operating processes. Now, a broadcaster, with just a click of a mouse, can apply for permission, registration, track applications, calculate fee, and execute payments. It also ensures smooth coordination with other ministries, integration with e-office, and enables analytics and reporting. This initiative would help the country and the industry in bringing more efficiency to business. This portal has increased the transparency in a working style of all concerned users. We are hopeful that this portal will act as a major milestone towards Government of India initiative for ease of doing business. I have experienced the portal myself. It is very easy, very convenient. It has all the required elements to be filled for the TV channel's permission. Broadcast Seva portal would lead to greater transparency and accountability by enabling information symmetries, removing various hurdles, and providing digital solutions to achieve end-to-end facilitation. सरकारी मंजूरियां जल्दी मिल रही हैं, जरूरी परमिट जल्दी मिल रहे हैं। ये वो प्रयास हैं जिनको देशवासियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से प्रेरणा मिली। Broadcast Seva portal is a giant leap towards realizing Prime Minister Narendra Modi's mantra of minimum government, maximum governance, and soon it will be linked to the Government of India's flagship initiative, National Single Window System. I would now like to request the Honorable Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Apurva Chandra, for his welcome address. Honorable Shri Anurag Singh Thakurji, Minister for Information and Broadcasting, officers of the ministry, all the representatives of the broadcasting community and the media community. First of all, I would like to thank the Honorable Minister for his guidance after he joined in shaping this Broadcasting Seva portal. Because after he joined, his one wish was that we should do ease of business in line with what the vision of the Prime Minister. I was Secretary Industries of Maharashtra in 2014 when the Honorable Prime Minister joined the first time. And the first meeting which he took, calling all the chief secretaries to Delhi, was on ease of doing business. So that is the mantra on which this government has been working. And this Broadcast Seva portal today is an aspect of that achievement and that desire. As was mentioned by the Shri Vikram Sai in 2016 also, the Broadcast Seva portal was working in some form, but then there were a lot of issues, there were a lot of deficiencies, and today this recast Broadcast Seva portal is being launched. There are several improvements in this, and which we would like to listen more to the broadcasters, what they feel, because a trial version has been working on for the past 1 month or so. It is not just that we will start getting applications online, because we want to process them also through a system. After getting the application, this Seva portal has been integrated with the Ministry of Corporate Affairs portal so that we get immediately the DIN number, the directors of the directors, the balance sheet of the company, and we are able to process that accordingly rather than always getting the inputs again and again. As was seen in the video, there are more than 850 new satellite channels, 350 community radio stations, 350 or so FM channels. And for many of these, they have to come again and again to the ministry.
जब मैं यहाँ मिनिस्ट्री में आया तो मैंने देखा सबसे मोटी फाइलें जो आती हैं वो ब्रॉडकास्ट सेवा ब्रॉडकास्ट की ही आती है, इतनी मोटी मोटी फाइलें जो कि हमें कमी देखने को मिलती थी मेरी पिछली मिनिस्ट्री में। तो मेरे को अपेक्षा है और मेरे अपने अधिकारियों से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि आगे से अब सारा जो है ई फाइल पे आए और ये फाइलों का सिस्टम बंद हो जाए जो मोटी मोटी फाइलें आती है। और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी ये पता चले कि उनकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, कैसे प्रोसेस हो रही है, कहाँ पर पेंडिंग है, और अगर हमारे यहाँ कोई विलम्ब होता है तो वो कम से कम हो और ब्रॉडकास्टर्स को इसकी सुविधा अधिक से अधिक मिले। आगे हमारी अपेक्षा यही है कि जैसे हमारे यहाँ कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस में समय लगता है या टेलीकॉम से WPC में समय लगता है, तो वो भी इसमें दिखाई देगा और उससे हम इंटीग्रेट कर सकेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन कब हमने भेजी WPC को, वहाँ कितने दिन से पेंडिंग है, सैक्फा में कितने दिन से पेंडिंग है और हमारे यहाँ कितने दिन रहा। तो इस सब का भी उसमें हम धीरे धीरे इसको थोड़ा प्रगति करते रहेंगे और आप सबका सहयोग इसमें हमें अपेक्षित है। धन्यवाद। Thank you for the insightful speech, sir. It is now time to formally launch the Broadcast Seva portal. I request the dignitaries to release the brochure for Broadcast Seva portal. Thank you very much. I would now like to request the stakeholders across India's vibrant broadcasting industry to share their comments and experiences. First up, I would like to invite Shri Harit Nagpal, CEO Tata Play DTH, to share his thoughts. Could we please pass the mic to Shri Harit Nagpal? It is seriously an honor and a pleasure to be here at such an important moment. आपने सही कहा सेक्रेटरी साहब कि मोटी मोटी फाइलें जो कुरियर से हमें भेजनी पड़ती थी, कम से कम हम ये काम अपने दफ्तर में बैठ के जो भी एंट्री करनी होगी वहीं से कर देंगे। डिजिटाइजेशन और बिज़नेस को आसान करने की जो शुरुआत इस गवर्नमेंट से हुई है, आई थिंक ये उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप होगा। शुक्रिया। I would now request Sri K. Aravamudan, Executive Director, Star TV, to give his comments. Thank you very much everyone for inviting me. It's a great pleasure. I have been associated with this ministry for the last 15 years. I have seen many changes, and this is a phenomenal change actually I can think of. I hope the ministry, other ministries also incorporated into this initiatives like Minister of Home Affairs and Department of Space are most important elements in that. I hope if that comes, then this is the next big thing happened to the broadcasting sector in the last 20-25 years. Thank you very much for inviting me. We request Ms. Archana Kapoor, Station Director, Radio Meva, to share her comments. नमस्कार सभी को। मुझे लगता है कि इस तरीके के पोर्टल से बहुत सारी एडवांटेजेस होंगी, ख़ास तौर पे जब हम सामुदायिक रेडियो की बात करते हैं जो कि दूर दराज के इलाकों में बहुत दूर लेकिन इंटरनेट पहुंच गया है, लेकिन और बाकी सुविधाएं पोस्टल डिपार्टमेंट शायद नहीं पहुंचा है, कोरियर्स नहीं पहुंचते हैं। मैं तो मेवात में काम करती हूँ, वहाँ से कोरियर्स वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का एक पोर्टल होता है जिससे कि दूर दराज के इलाके एक ही बटन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। सेक्रेटरी साहब ने पहले ही कहा कि अगर ये इंटीग्रेशन हो जाए, हम लोग सर ये एक बहुत अपॉर्चुन मोमेंट है, मैं मंत्री महोदय को भी एड्रेस कर रही हूँ इसमें, कि 2002 में सर कम्युनिटी रेडियो की पॉलिसी आई थी और आज 20 साल के बाद 2022 में जब ये पोर्टल लॉन्च हो रहा है, तो मुझे लगता है कि दिस विल बी अ ह्यूज पुश in the direction of community radios, in the direction of connecting communities and giving them an opportunity to become part of this growth process that we are all witnessing. So thank you so much for this, and as Secretary Saab said, if this can be integrated with WPC and others, there were 16 milestones that we had to cover
to get the license of a community radio. If that can happen with just one window, which all of us have been asking for, it will be a great achievement. So thank you so much for this, and it's a pleasure to be part of this journey. Thank you so much. We now have Shri Naresh Chahal, Vice President, Sony Pictures, sharing a few words with us. Good afternoon, sir. Sir, I'm in the industry since last 20 years, and I know for filing application for new channel, we have to send person with 8 files in a scooter or the bus, and it takes 2 years' time, 3 years' time. I'm pleased to inform you that since last 2 years, we have not come to the ministry for any work. Everything has been smooth, thanks to the ministry officials, thanks to the secretary, and I'm very happy, and I hope with the new initiative and the new version of this broadcast portal, it will help a lot. Thanks. I now request Mr. Chadha from Planetcast to share a few words with us. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं MIB के सब अफसरों को धन्यवाद देना चाहूँगा, मंत्री जी का स्वागत करना चाहूँगा। प्लैनेटकास्ट सबसे पहला टेलीपोर्ट ऑपरेटर था, जो कमर्शियल टेलीपोर्ट ऑपरेटर जो 2001 में शुरू हुआ था। उसके बाद हम हिंदुस्तान में स्टार को, सोनी को, वायकॉम को लेके आए और आज हम करीब 300 टीवी चैनल अपलिंक करते हैं। और ये हमारा बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट रही है मिनिस्ट्री के अफसरों से कि सिस्टम को थोड़ा ऑनलाइन करें, सिंगल विंडो क्लियरेंस करें, ताकि हम आसानी से काम कर सकें। और एक्चुअली में पिछले 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर जो चीज़ें सुधरी हैं वो काफ़ी सराहनीय है। और जो प्रधानमंत्री जी का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके आपने स्टेप उठाया है, उसका हम सभी ब्रॉडकास्टर्स बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं कि ये सारे आपस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, WPC, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, NOCC, ये सब सिनर्जी में काम करेंगे और सारी फाइल्स इसी तरीके से डिजिटल पोर्टल में क्लियर होती रहेंगी। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के लिए। थैंक यू। Thank you for sharing your valuable comments about Broadcast Seva portal. I would now request the Honorable Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur, to deliver the keynote address. ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के लॉन्च के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, एडिशनल सेक्रेटरी नीरजा शेखर जी, जॉइंट सेक्रेटरी संजीव शंकर जी, विक्रम सहाय जी, विभाग के सभी माननीय अधिकारीगण, इंडस्ट्री के अलग अलग स्टेक होल्डर्स, उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रों, मैं सबसे पहले तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के आज लॉन्च के अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये भी है कि डिजिटल इंडिया की कहानी न्यू इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल कहानी है। हम जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी की बात करें, जैम ट्रिनिटी की बात करें, या UPI भीम डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स की बात करें, डिजी लॉकर की बात करें, ये सब कुछ ऐसे प्रयास हैं पिछले कुछ वर्षों में जहां हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग और उसके माध्यम से सिस्टम में पारदर्शिता लाने का काम और सिस्टम को और जवाबदेह करने का काम किया है। और संकट के समय, आपदा के समय सबसे बड़ा कोई संकट मोचक के रूप में काम आया है तो जो डिजिटल इंडिया का एक सपना प्रधानमंत्री मोदी देखकर चले थे, उसमें जितने कदम पिछले 8 वर्षों में उठाए गए, ये डिजिटल इंडिया के कारण ही कोविड-19 पैंडेमिक के समय बहुत सारी सुविधाएं भी हम जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हुए।
और कहीं ना कहीं जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं उसमें भी डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जहां ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल की मैं बात करूं तो ये ब्रॉडकास्ट, सेवा और पोर्टल, ये 3 शब्दों में इसका पूरा सार है, इसका पूरा मैसेज है। और इस पोर्टल के माध्यम से, जैसा सभी शेयरधारक, सभी स्टेक होल्डर्स ने यहाँ पर कहा कि मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सचिव महोदय ने कहा बड़ी बड़ी फाइलों पर नहीं जाना पड़ेगा। जो एप्लीकेंट होगा, जब उसने एप्लीकेशन दर्ज की तो उसको ये भी पता होगा कि वो एप्लीकेशन कैसे मूव कर रही है, और बगैर किसी सिस्टम में किसी को पकड़ कर काम कराने की बजाय ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एक होगा और जो पोर्टल पर इसका काम होगा वो अपने आप में बहुत बड़ी पारदर्शिता लाएगा और सिस्टम को जवाबदेह भी तय करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की मैं बात करूं, ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार बढ़ रहा है। $25 बिलियन की इंडस्ट्री है, अगले 2 सालों में $30 बिलियन की हो जाएगी। अगर केवल मीडिया की भी मैं बात करूं तो मीडिया में भी सन 2000 में जहां पहला चैनल लॉन्च किया गया था, आज 2022 में 900 से ज़्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हमारे पास हैं, 1762 से ज़्यादा मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स हमारे पास हैं और 350 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस, 380 से ज़्यादा FM चैनल्स हमारे पास हैं। तो अपने आप में देख सकते हैं कि आप कितनी ताकत मीडिया के क्षेत्र में बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करनी हो तो बहुत लंबा समय लोगों को लग जाता था पेपर वर्क करने में। उसके कई कारण हैं। पहली बार आप आते हो चैनल की या परमिशन लेने के लिए, आपको फिर आना पड़ता है, उसमें कई बार कुछ संशोधन करने हैं, कुछ अनुमति में कुछ बदलाव करने हैं, या पेमेंट करने के लिए उसके लिए भी आपको देखना पड़ता है। इन सबको ही अब आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये पोर्टल के माध्यम से सारी सेवाएं आपको वहाँ पर मिलेंगी। और आपने पहले भी देखा होगा कि जो हमने नोटिफाई किया था केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स, जहाँ पर हमने स्टैट्यूटरी मैकेनिज़्म, ये जो ग्रीवियंस कंप्लेंट्स आम नागरिकों के आते थे उसको एड्रेस करने के लिए हमने इसको लागू किया था। इससे भी बहुत बड़ी पारदर्शिता आई है और इससे भी आम नागरिक को भी लाभ मिला है और कहीं ना कहीं ग्रीवियंस रिड्रेसल में भी एक बड़ा काम हुआ है। जहाँ तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, ये जैसा मैंने पहले कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की जो सोच रखते हैं, ये डिजिटल इंडिया अम्ब्रेला के अंतर्गत ही ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ये सारी सेवाएं सभी स्टेक होल्डर्स को देने जा रहा है, जहां पर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स होंगे, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स होंगे, MSOs होंगे, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस वाले होंगे, प्राइवेट FM चैनल वाले होंगे। जब इन सबको ये सुविधाएं मिलेंगी तो जो सोच प्रधानमंत्री जी की है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। और यही नहीं मित्रों, ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो है एक नए अवतार में भी आप सबके सामने आया है। और पिछले 1 महीने में जब हमने कुछ स्टेक होल्डर्स को कहा कि आप इस पर ट्राई करके देखिए, इसमें कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, तो सबने अपने अनुभव आप सबके साथ साझा किए ही हैं। ये जल्द ही ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ये डिजिटल सॉल्यूशन जो हैं वो आपको एंड टू एंड फैसिलिटेट कर सकें, आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। एक बहुत बड़ी सुविधा इससे होगी, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाने की बजाय, अलग अलग जगह जाने की बजाय नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी। 360 डिग्री डिजिटल सॉल्यूशन हमारे सुशासन का स्तंभ है, उसका आधार है, उसका पिलर है। और कहीं ना कहीं इसी के कारण ही जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, एफिशिएंसी की, ट्रांसपेरेंसी की
और रिस्पॉन्सिवनेस सिस्टम में लाने की, वो सब बिंदु कहीं ना कहीं एक पोर्टल आपको देखने में लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को पूरा करने का काम भी करता है। हमारा प्रयास ये भी है कि आने वाले समय में किस तरह से और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस सेक्टर में और बढ़ावा दिया जा सके, और ये सिंगल विंडो सिस्टम अगर इसमें फिर भी आपको लगता है कहीं पर कोई कमी पेशी होगी तो उसमें भी सुधार करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि सेवाओं में फैसिलिटेट करने में हमारी ओर से कोई कमी ना रहे। आज इंडस्ट्री के लोग भी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। आपने भी इस पोर्टल को बनाने में अपने कीमती सुझाव पहले दिए। मुझे पूर्ण आशा है कि आपकी आशाओं के अनुरूप हम लोग इस पोर्टल को बना पाए हैं, और मीडिया इंडस्ट्री के लिए ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल सही मायने में एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, जैसा हमने पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क के रूप में भी प्रयास किया है कि कम से कम दिक्कत काम करने वाले को आए, स्पेशली हमारे मंत्रालय में। इससे पहले जब मैं पूर्व के मंत्रालय में भी था, वित्त मंत्रालय में, तब भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में कंपनीज एक्ट में हमने बहुत सारे बदलाव लाए थे। क्रिमिनलिटी वाले पार्ट को बाहर निकालने का हर जगह से प्रयास किया था, ताकि ये जो भय कहीं ना कहीं रहता है जेल जाने का, वो डर पैदा किया जाता है, उन सब से बाहर निकाला जाए। हम अपने डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे ऐसे कानून, ऐसी बहुत सारे चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जिसका आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि और क्षेत्रों में भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कैसे आपको आने वाले समय में बहुत कुछ देने वाले हैं। आज क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं है, केवल ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का लॉन्च ही करना था, इस समय पर मैं अपने सभी विभाग के संबंधित अधिकारियों को उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए अपने काम को पूरा किया, और इंडस्ट्री के लोगों ने अपनी इनपुट देकर हमें बेहतर सेवाएं देने के लिए एक मौका दिया है। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir, for your encouraging words and progressive ideas for building a new India. With this, we come to the end of today's event. On behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, it is my privilege and honor to thank the dignitaries present here for making this event a huge success. We would like to thank our Honorable Minister, Shri Anurag Singh Thakur, for his guidance and robust leadership, and all the dignitaries for their remarkable contributions and valuable words. I would like to thank our media units, the Press Information Bureau, and the Bureau of Outreach and Communication for their cooperation in ensuring the success of this event. A big thanks to the administration, together with the earnest efforts of our officers, Ms. Ankita Dhanda and Mr. Prateek Jain, and a dynamic team of young professionals for their efforts and assistance in bringing this event to fruition. I would like to extend my gratitude to each one of you present here with us today and the media for being here in such large numbers as our pillars of support. Thank you so much once again. As we sign off, I request all the dignitaries to join us for high tea on the 4th floor. Wishing you all a wonderful evening ahead. Thank you.